Hello friends, how are you? Have a nice day. Myself Prakash sir, Need Computer Tutorial Platform congratulate you to our YouTube channel. ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲି थैंक्स टू मनोरंजन दलई बिकॉज यू हैव कमेंटेड द करेक्ट आंसर क्वेश्चन थिला क्रिमिनल मानक कंप्यूटर रु फाइल जदि डैमेज हुए किंबा डिलीट हुए ताकू किए रिकवर करे ये वीडियोर प्रथम क्वेश्चन ने मु तार आंसर डिस्कशन करी एमसीक्यू रा प्रत्येक क्वेश्चन एवं आंसर मूलर शेष पर्यंत देखंतु निश्चित भाव में प्रत्येक एग्जाम एवं इंटरव्यू रे आपन को सपोर्ट करिवो लेट अस प्रोसीड दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 41 who recovers and read damaged and deleted files from criminals computer criminal रो कंप्यूटर रु किए डिलीट हेतिबा किबा डैमेज हेतिबा फाइल को रिकवर करे द अल्टरनेटिव चॉइस आर रोबोटिक्स कंप्यूटर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सिमुलेशन एंड एनिमेशन द करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर फोरेंसिक एक्सपर्ट सिमुलेशन मीन्स द क्लिनिकल सिचुएशन को वीडियो माध्यम प्रोड्यूस करने को आम सिमुलेशन कही था रोबोटिक्स रोबोट कंप्यूटर रे जो टेक्नोलॉजी व्यवहार करा जाए ताकू रोबोटिक्स बोली कहा जाए द नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर दैट यूजेस ए कंटिन्यूअस सिग्नल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर ऑल ऑफ द अबव The correct answer is analog computer. Digital computer use discrete signal for operation. Server computer providing services to the client or workstation. Networking रे server computer client बा workstation मानू सर्विसटा दे था डिजिटल कंप्यूटर जो सिग्नल बा डाटा में कंप्यूटर को दियंती ताकू काउंटिंग करके प्रोसेसिंग करे सो दिस इज नॉट एनालॉग प्रोसेस सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज एनालॉग कंप्यूटर The next question is, the system allow you to implement network-wide security from a single machine and run virus scans, install programs across the network called. The options are supercomputer, personal computer, workstation computer and server computer. The correct answer is server computer. The next question is, input and output equipments, main memory, control unit, arithmetic logic unit and storage media of a digital computer is termed as. Options are computer architecture, computer anatomy, computer network and computer hardware. The correct answer is computer anatomy. Computer architecture कहले this is the rule that describe the functionality and implementation of a computer. Computer network कहले group of a computer that is connected among themselves for data communication and online communication, data transmission and online communication. The next question is, the system unit that contains the most vital part of the personal computer is called. The alternate are BIOS, motherboard, monitor and CPU. The correct answer is motherboard. Because BIOS is the program that is used for booting the system, monitor is the output that will visualize the result, and CPU is called as the brain of the computer system. So that is why motherboard is the unit that contains the most vital part of the personal computer. Then question number 46 is, which of the following are the predominant manufacturers for desktop and laptop processor? डेस्कटॉप किंबा लैपटॉप रे प्रोसेसर जो व्यवहार करा जाउची तार से प्रोसेसर डेवलप करथुवा नामी दामी कंपनी एक्चुअली किए द ऑप्शंस आर मोटोरोला ह्यूलेट पैकर्ड इंटेल एएमडी बोथ सी एंड डी द करेक्ट आंसर इज बोथ सी एंड डी बिकॉज इंटेल इज द कंपनी दैट इज प्रोवाइडिंग द कोर आई प्रोसेसर एडवांस प्रोसेसर and AMD is the company that is providing the Ryzen processor. So that is why Intel and AMD both are the advanced predominant company, manufacturing company that is providing processor. Nowadays the present processor. The next question is, data moves in and out of the CPU
through embedded wire called parallel lines, electronic wires, bus, optic cables, and none of the above. The correct answer is bus. Bus is the system that are transferring data between the CPU and computer peripherals, CPU and memory, and different points within the CPU. So that is why bus is the correct answer. Bus wire. The next question is, which of the following is not hardware? एमान भितर कोटा हार्डवेयर नुह. The options are printer, optical mouse, Python, processor, and none of the above. The correct answer is Python, because a printer, optical mouse, processor, these are the hardware of a computer. But Python is this computer software program. It is a language that is used to build website and software programs. So that is why Python is a software program used for software development. Question number 49 is, bus used to carry data from and to the memory of a computer called. जो बस माध्यम रे कंप्यूटर मेमोरी को डाटा ट्रांसफर करा जाए ताकू कौन कहती? डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, एंड नॉन ऑफ द अबव. द रियल आंसर इज डाटा बस, because address bus carry memory address from the processor to other components of the computer. Control bus, what it can do? It can carry signals from the processor to the other components. So that is why according to this question, data bus is the correct answer. Then question number 50, which device is mostly used to enter data or information in a computer system? The alternative choice are scanner, touch screen, light pen, both A, B, C, then none of the above. The correct answer is none of the above, because scanner is not used for entering data, touch screen, it is not used for entering data, light pen, it is also not used for entering data. So the real answer is keyboard. So that is why none of the above or point D is the correct answer. The next question is, a SIM is a type of a memory module containing random access memory used in computer having number of pins. एठी मु आपन को सिम मोबाइल सिम कथा कहू नाही, मु एठी कहूची सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, SIAM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल. ए सिम रे केतोटी पिन थाए? द करेक्ट आंसर इज 72 pins. This SIM contains one or several RAM chips on a small circuit board. Then question number 52 is, 1 byte is equivalent to dash. 8 nibbles, 2 nibbles, 4 nibbles, none of the above. The correct answer is 2 nibbles, because आमे जानि चंती जतबेले कंप्यूटर रे गोटे बाइनरी डिजिट स्टोर हुए सेतबेले जतिके स्पेस गोटे बाइनरी डिजिट ऑक्युपाई करे ताकू 1 बिट स्पेस बोली कहा जाए. इट ऑक्युपाई 1 बिट. तेणु सही अनुसार जदि 2 बिट्स ऑक्युपाई कला, देन वी कॉल इट 2 बिट्स इज इक्वल टू 1 क्रॉम, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट और 2 निबल्स, 16 बिट्स इज इक्वल टू 2 बाइट्स और 1 वर्ड, 32 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट्स और डबल वर्ड, 64 बिट्स इज इक्वल टू 8 बाइट्स और एक क्वाड वर्ड. So that is why 1 byte, according to this question, 1 byte is equivalent to 2 nibbles. Then question number 53, which application for computers hard disk causes to work faster than before? The alternative are fragmentation of data, formatting disk drive, deleting unusual files, and none of the above. The correct answer is fragmentation of data. फॉर्मेटिंग कले डिस्क फॉर्मेटिंग कले डिस्क सब डाटा डिलीट हो जाए, डिस्कटा पूरा क्लीन हो जाए. आ जदि अनयूजुअल फाइल डिलीट करबा किछिटा परिमाण सिस्टमटा स्पीड हुए, किंतु फ्रैगमेंटेशन द्वारा फाइल गुड़ाक डिजिटल फाइल गुड़ाक ऑर्डरिंग करा जाए, सेक्टर ऑर्डरिंग करा जाए, जहाँकि कंप्यूटर हार्ड डिस्क रे स्पीडटा टिके फास्ट होता है देन बिफोर. हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स ए सेक्टर ऑफ ए हार्ड डिस्क होल्ड? हार्ड डिस्क रा गोटे सेक्टर रे केते बाइट रहे? द करेक्ट आंसर इज 512 bytes. 1024 bytes, it is not the correct answer. 1024 kilobytes, it is not the correct answer. So the correct answer is 512 bytes. Then question number 55 is, which of the following is to support faster data rate from and to hard disk? The alternative choice are IDE, SCSI, FDD, EIDE. So the correct answer is EIDE. EID full form is Enhanced Integrated Drive Electronics that supports a faster data rates.
FDD means floppy disk. This is the data storage device. ID means integrated development environment. That is a software application to develop software code. SCSI small computer system interface. It allows to add or connect up to 15 devices to the computer. So that is why correct answer is EIDE. How many color dots make up one color pixel on a screen? The alternatives are 255 dots, 16 dots, 1 dot and 3 dots. The correct answer is 3 dots. Then which of the following natural element is the primary element in computer chip? The alternatives are silicon, iron, carbon and uranium. The correct answer is silicon. Which of the following is the extension of a file created in Notepad? Notepad रे जदि आमे फाइल गोटे क्रिएट करूचंती तार एक्सटेंशन नेम कोन आसीबो आमे जानि चंती गोटे फाइल क्रिएट कले गोटे फाइल रो डॉट रो बाम पटकु जोटा रहे ताको आमे प्राइमरी नेम बोली कहंती डॉट रो जान पटकु जोटा रहे ताको आमे एक्सटेंशन नेम बोली कहिथांती सो दैट इज व्हाई द अल्टरनेटिव चॉइस आर .txt .bmp .doc .ppt द करेक्ट आंसर इज .txt .bmp ये एक्सटेंशन नेम कार हुए ना जदि आमे पेंट ब्रश रे फाइल बनौचंती ताको बीटमैप फाइल बोली कहिले तार एक्सटेंशन नेम .bmp आसीबो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जे डॉक्यूमेंट बनैबा ताले डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन नेम .docx आसीबो जदि पावर पॉइंट रे आमे फाइल बनैबा ताले .ppt आसीबो जदि C++ एनवायरनमेंट रे आमे प्रोग्राम बनैबा टर्बो C++ एडिटर रे आमे जदि प्रोग्रामिंग करबा ताले cpp आसीबो आ जदि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे फाइल बनैबा ताले तार एक्सटेंशन नेम .xlx आसीबो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पुराना वर्जन जदि आमे यूज करूचंती ताले आमे .xls पाइबा माइक्रोसॉफ्ट नुवा वर्जन यूज करले आमे .xlsx पाइबा दिस इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स अ ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन नेम सो द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर डी जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट BMP bitmap image file PNG portable network graphics so that is why correct answer is point number D. Then question number 60 is which of the following value is the correct value of the binary code 1011 and 1111 1011 रो binary code रो decimal value केते आ चारटा 1 रो decimal value केते the correct answer is the alternatives are 11 and 14 11 and 15 12 and 15 12 and 14 the correct answer is 11 and 14 11 and 15 B is the correct answer because you just check the right side description mathematical derivation 1011 it is described as 2 to the power 0 into 1 2 to the power 1 into 1 2 to the power 2 into 0 and 2 to the power 3 into 1 that value is 11 and here 2 to the power 0 into 1 2 to the power 1 into 1 2 to the power 2 into 1 2 to the power 3 into 1 its real value is 15 so that is why 11 and 15 is the correct answer. Question number 61 we connect a keyboard mouse mobile cable and pen drive at USB port termed as आमे जो USB पोर्ट रे कीबोर्ड केबल माउस केबल मोबाइल केबल एंड पेन ड्राइव यूज करंती से पोर्ट को आमे कोन कहंती तार फुल फॉर्म टा कोन USB रो फुल फॉर्म कोन The alternative choice are universal system board, uni-defined system bus, unshielded system board, universal serial bus. The correct answer is universal serial bus. The next question is what is the permanent memory built into your computer called? कंप्यूटर भितर जो परमानेंट मेमोरी बिल्ट करा जाय थाए ताको हमें कोन कहंती सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव डिजिटल वीडियो डिस्क और डीवीडी बोथ A B and C and none of the above the correct answer is none of the above because solid state drive hard disk drive DVD एमाने these are not inbuilt permanent memory chip inbuilt permanent memory device एमाने inbuilt नुहंती the correct answer is ROM chip SSD, hard disk, DVD are not built into the computer. So that is why the correct answer is ROM. So according to this question, point number E, none of the above is the correct answer. Then question number 63 is when we work on any document on the computer, it is stored temporarily on dash. जेतबेले आमे कोनोसी डॉक्यूमेंट बनाउचंती डॉक्यूमेंट तयारी करचंती सेतबेले टेम्पररली ए डॉक्यूमेंट ता कोठी रहे व्हाट इज दैट लोकेशन वेयर इज दैट लोकेशन द ऑप्शंस आर RAM, hard disk, flash memory, ROM and none of the above. The correct answer is random access memory because random access memory is the volatile memory or temporary memory where
data will be stored during application. Hard disk drive, this is the permanent storage media. Flash memory, this is the non-volatile memory that erase data from the block or rewrite them. Read-only memory, we can only read but cannot write onto the read-only memory. So that is why the correct answer is random access memory RAM. But point number A is the correct answer. The next question is the medium used between CPU RAM to speed up the processing power of a CPU called virtual memory, cache memory, flash memory, CD-ROM, none of the above. The correct answer is cache memory. Because virtual memory, this is the memory on the hard drive that the CPU uses an extended RAM. Cache memory is the faster memory that is used for faster application. And RAM memory is the fast memory. The data will be stored in RAM fast. Then cache memory is the faster memory. The data will be stored which is executed immediately. And the register memory is the fastest memory that will contain the data whenever the processing is going on. So that is why cache memory is the faster memory according to this question. The next question is question number 65. Which program of a ROM chip is responsible for loading operating system from hard disk into the RAM? The alternative choice are device driver, system program, BIOS, supervisor program and none of the above. The correct answer is BIOS, basic input output system. रोम चिप भितर बायोस बोली एक प्रोग्राम अच्छी जो प्रोग्राम टा कंप्यूटर ऑन कला परे ऑटोमेटिकली चार्ज हला हुए एवं से कंप्यूटर को बूट करिवारे सहायता करिथाय. सो दैट इज व्हाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड एज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम दैट इज अवेलेबल इन रोम चिप. At the end of this video there is a question for you. Comment me the real answer. That question is the technology used in clinical workflow and hospital by surgeons for delicate operations by manipulating devices through computer is called. बड़ बड़ नर्सिंग होम रे क्लिनिकल एक्टिविटीज रे क्लिनिकल वर्क फ्लो रे डॉक्टर माने सर्जन माने डिलिकेट ऑपरेशन कला बेले कंप्यूटर द्वारा जो डिवाइस मैनिपुलेट करिथांती जो डिवाइस को यूज करिकरी जो डिवाइस और टेक्नोलॉजी को यूज करिकरी डिलिकेट ऑपरेशन करंती व्हाट इज दैट कॉल्ड सेटा का मैं कोन कहबा. होप दिस वीडियो विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट. आम वीडियो को आपण माने देखिथिबारु आपण मानकु धन्यवाद. मु जो प्रश्न ए वीडियो रे उपस्थापना कली आपण कमेंट माध्यम रे तार आंसर मते रेफर करिवे. निश्चित भाव में ए प्रश्न उत्तर मु आ परवर्ती वीडियो रे उपस्थापना करी प्रेजेंटेशन करी. आपण जदि आम वीडियो को नुआ करी आछंती आम वीडियो चैनल को नुआ करी देखुचंती ताहले सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु आ बेल आइकन को क्लिक करंतु. ए वीडियो आपण को केमती लागिला आपण हमको कमेंट माध्यम रे जणांतु.